नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प करेक्शन देखा गया था निफ्टी में स्पेशली। तो आइए जानते हैं आज इंडेक्स के लिए कौन से क्रूशियल लेवल्स रहेंगे फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव और कौन से सेक्टर्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म कर सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। फर्स्ट अप कमिंग टू दी अपडेट इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट्स में फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग डे एक अच्छा रैली देखा गया, स्पेशली नैस्डैक और S&P 500 में। द नैस्डैक गेन्ड 1.54% while the S&P 500 closed 0.74% higher. Dow traded relatively range bound within a range of 182 points, ultimately ending the session on a flat note. Going ahead for S&P 500, it is likely to continue its northward journey and test the psychological level of 6040 followed by 6100. Coming to Brent oil, so Brent oil has been consolidating in a narrow range over the past three trading sessions. Going ahead, 73.50 is expected to provide immediate support. On the upside, 77 zone is likely to act as the key resistance. Coming to the update regarding dollar index, so the US dollar index has witnessed a minor pullback on Thursday. However, the major trend of the index still remains bullish. Going ahead, it is likely to continue its upward journey and test 105.60 followed by 106 levels. Now coming to the update regarding our markets in trade yesterday. So yesterday was the weekly expiry for Nifty as well. So following 2 days of pullback rally, that is positive momentum, the benchmark index Nifty resumed its downward trend yesterday, closing below 24,200 mark with a decline of 1.16%. If we see on the daily chart, it has formed a bearish candle and closed below its 100-day EMA level. Going ahead, the zone of 24,070 will act as the immediate support for the index. Any sustainable move below this would lead to an extension of the selling pressure towards the levels of 23,840 levels. On the upside, the zone of 24,380 will act as the immediate hurdle for the index. Only on a crossover about 24,380 we would witness a short covering move towards 24,600 levels. Coming to the option chain data, that is the next week series option data, 24,200 और 24,400 के स्ट्राइक में डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग देखा जा रहा है, वाइल ऑन द पुट साइड 24,000 और 23,000 के 800 के स्ट्राइक्स में पुट राइटिंग अभी देखा जा रहा है. वाइल अगर PCR के बारे में बात करें तो वीकली PCR करंटली स्टैंड्स एट 0.61 और नवंबर सीरीज़ का मंथली PCR स्टैंड्स एट 1.18. Coming to the update regarding Bank Nifty, so Bank Nifty also faced selling pressure yesterday, closing below the key psychological level of 52,000 with a decline of 0.77%. However, the short-term trend remains bullish as the index continues to trade above its crucial moving averages. Going ahead, the zone of 51,600 will act as the immediate support for the index. Any sustainable move below the levels of 51,600 will lead to a correction towards 51,200 levels. On the upside, the zone of 52,200 will act as the immediate hurdle. अगर ऑप्शन डेटा के बारे में बात करें बैंक निफ्टी का, सो ऑन द वीकली सीरीज इफ़ यू सी 52,000 और 52,500 के स्ट्राइक में डिसेंट कॉल राइटिंग देखा जा रहा है, वाइल पुट साइड पे 51,500 और 51,000 के स्ट्राइक में पुट राइटिंग देखा जा रहा है. PCR डेटा जो है वीकली एक्सपायरी का, दैट करंटली स्टैंड्स एट 0.72 वाइल मंथली सीरीज का PCR स्टैंड्स एट 1.04. कल एडवांस डिक्लाइन रेशियो लार्जली डिक्लाइनिंग स्टॉक्स में ही देखा गया. द मोमेंटम वाज क्लियरली इन फेवर ऑफ द डिक्लाइनिंग काउंटर्स. लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स क्लोज्ड ऑन द नेगेटिव साइड इन ट्रेड yesterday. Coming to the key sectors in focus, so technically if you see Nifty Auto, Nifty FMCG, Nifty Pharma, Nifty Healthcare, these are the sectors that are likely to underperform in the short term, while Nifty IT and Nifty PSU Bank are likely to outperform in the short term. अगर FI/DI डेटा के बारे में बात करें तो FI का लगातार सेल फिगर आ रहा है. अगर पूरा अक्टूबर सीरीज़ भी देखा जाए पूरा सेल फिगर ही था, and they have started the November series 2 on a negative note by constantly selling in the cash market segment.
In yesterday's trade as well, they sold to the tune of 4,888 crores, while DIS purchased to the tune of 1,786 crores. That's a wrap of today's edition of the podcast. Thank you for regularly tuning in. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.